अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। मैं आपको आपके अपने चैनल द करंट एजुकेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने जिस मौजू पर वीडियो बनाई है वो कंप्यूटर के हैं अब्रीविएशन। मैंने आपको पढ़ाना है कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तकरीबन हर जॉब के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 15 नंबर के MCQ इस सब्जेक्ट में से आते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डाटा इंटरप्रेटर का हो पेपर, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, चाहे जो UDC का पेपर हो, चाहे LDC का पेपर हो, इसमें से 70% के मार्क्स इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में से आते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से आज की वीडियो, क्योंकि कंप्यूटर के हमने आज अब्रीविएशन देखनी है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर लफ्ज commonly operated machine particularly used for trade, technology, education and research purpose। उसके बाद जो अब्रीविएशन आता है AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग। उसके बाद आता है AI पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद आता है अलगोल अर्थमेटिक एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद AOL अमेरिका ऑनलाइन। उसके बाद API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उसके बाद APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। उसके बाद ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज। ATM स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद AVI ऑडियो वीडियो इंटरचेंज। ASCII अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AT एडवांस टेक्नोलॉजी। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BMP बिटमैप BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। BIU स्टैंड फॉर बस इंटरफेस यूनिट्स। BPS स्टैंड फॉर बाइट्स पर सेकेंड। BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC stand for carbon copy। CAI computer aided instructions। CDMA stand for coded division multiple access। CRT stand for cathode ray tube। CAD stand for computer aided design। CADD computer aided design and drafting। CD stand for compact disc। CDRW compact disc read writable। CM computer aided manufacturing। CROM computerized range of motion। CD-ROM compact disk read only memory। CDM stand for command। CISC stand for complex instruction set computer। COBOL stand for common business oriented language। CPI stand for clock cycle per instruction। CPU stand for central processing unit। CSS stand for cascading style sheets। CUS stand for character user interface। DAT stand for digital audio tape। ये वो अब्रीविएशन है जो तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो रहे होते हैं। DDR SDRAM डबल डेट रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DOS stand for disk operating system। DOC stand for disk optimizing computer। DOC stand for documents। DVD stand for digital versatile disk। DVI stand for digital visual interface। DVD-R stand for digital versatile disk recordable। DVD-RW digital versatile disk read writable। DBM stand for database management system। DRAM stand for dynamic random access memory। DDL stand for data definition language। DHTML stand for dynamic hypertext markup language।
DML stand for DML stand for data manipulation language. DNS stand for domain name system. DPI stand for dots per inch. DNA stand for distributed internet architecture. DFNet stand for Defense Advanced Research Project Agency Network. DVR stand for Digital Video Recorder. E-commerce stand for Electronic Commerce. S stand for Enhanced Data Rate for GSM. EDI stand for Electronic Data Processing. EDSAC stand for Electronic Data Storage or Automatic Calculator. EDVAC stand for Electronic Discrete Variable Automatic Compute. EB stand for exabyte. EIB stand for exabyte. EROM stand for erasable read-only memory. EPROM stand for erasable programmable read-only memory. EROM stand for electronically erasable programmable read-only memory. Email stand for electronic mail. EFS stand for encrypted file system. EDC stand for electronic digital computer. ENIAC stand for electronic numerical integer and calculator. FDC stand for floppy disk controller. FDD stand for floppy disk drive. Fortran stand for formula translation. FTP stand for file transfer protocol. FS stand for file system. FAT stand for file allocation table. FPS stand for frame per second. FLOP stand for floating point operation per second. FM stand for frequency modulation. GB stand for gigabyte. GIB stand for GB byte. GIF stand for graphic interchangeable format. GDI stand for graphical device interface. GPRS stand for general packet radio service. GUI stand for graphical radio service. GUI stand for graphical user interface. GBPS stand for gigabits per second. 3GB stand for third generation project. 3GPP stand for third generation partnership project. GML stand for geography markup language. GSM stand for global system for mobile communication. GHZ stand for gigahertz. Gigo stand for garbage in garbage out. HDMI stand for high definition multimedia interface. HTTP stand for hypertext transfer protocol. HTTPS stand for hypertext transfer protocol secure. HTML stand for hypertext markup language. HD stand for hard disk. HDD stand for hard disk drive. HPC stand for handheld personal computer, high performance computer. HP stand for Hewlett Packard horsepower. HSDPA stand for high speed downlink packet access. ISO stand for International Organization for Standardization. IMAP stand for Internet Message Access Protocol. Intel stand for Integrated Electronic. ISP stand for Internet Service Provider. Info stand for Information. IP stand for Internet Protocol. IPv stand for IPv Protocol version 4. IPv6 stand for IPv Protocol version 6. IO stand for Input Output. IOP stand for Input Output Processor. IBM stand for International Business Machine. IC stand for Integrated Circuit. IC stand for Information Communication Technology. IT stand for Information Technology. JAR stand for Java Archive. J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition. JD stand for Java Application Development. JPG stand for Joint Photographic Expert Group. JS stand for JavaScript. JSP stand for Java Server Page. KB stand for Kilobyte. KBD stand for Keyboard. KBPS kilobytes per second. LAN stand for Local Area Network. LCD stand for Liquid Crystal Display. LED stand for Light Emitting Diode. LL mean low level language. उसके बाद HLL means होता है high level language. MAN means
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट, मदरबोर्ड, MBPS जो उसकी स्पीड होती है, मेगाबिट्स, मेगाहर्ट्ज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये आप रीड खुद भी कर सकते हैं आगे। ये सारे वो अब्रिविएशन हैं जो तकरीबन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसके बाद जो इंटरनेट की स्पीड आ रही होती है वो उसको हम किस चीज में काउंट करते हैं, उसका क्या कहते हैं, देख MBPS मेगाबाइट पर सेकंड जो स्पीड आ रही होती है। उसके बाद KBPS किलोबाइट पर सेकंड, KBD स्टैंड फॉर कीबोर्ड, IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट, वायरस stand for vital information resource under size, 3G stand for third generation, GSM stand for global system for mobile communication, CDMA stand for code division multiple access, UMTS stand for universal mobile telecommunication system। उसके बाद बेन जो साइज है, मेमोरी का साइज है, हम किस तरह उसको मापते हैं, उसकी किस तरह पे मैच करते हैं। 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट्स बनते, 8 बिट्स हो तो 1 बाइट बनता है। उसके बाद 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद 1 MB में 1024 KB होते हैं। उसके बाद 1 GB में 1024 MB होते हैं। ये खुद रीड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो क्या कहते हैं मेमोरी का साइज है उसको हम 1 जूटा बाइट में रीड करते हैं। 1 जूटा बाइट 1 जीटा बाइट 1024 जीटा बाइट के बराबर होता है। ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। आप इसको बारी बारी आप रीड कर लें, चाहे आप इसलिए आपकी इजीली आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एब्रिविएशन से रेलिवेंट है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने रखी है जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज तकरीबन हर एग्जाम में रिपीट हो रही है, वो मैंने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। उसके बाद हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चलेंगे। इसमें चाहे स्टूडेंट ICS के हैं, चाहे IT के स्टूडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं और उस नॉलेज को अपने जॉब में यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।